अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पलबशा महमूद और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले अहम खबर यह है कि ईरान ने पाकिस्तानी सालिसों को अमरीका के साथ जंग के खात्मे की नई तजावीज़ पेश कर दी हैं। ईरानी सरकारी मीडिया ने खबर की तस्दीक कर दी। इरना के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अपनी तजावीज़ जुमेरात को पाकिस्तानी सालिसों के जरिए भेज दी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने भी पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार दे दिया। ईरान का अमरीका के नाम नया पैगाम, बतौर सालिस पाकिस्तान बना फिर मेहरबान। ईरान ने पाकिस्तान को अमरीका के साथ जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ पेश कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया ने खबर की तस्दीक कर दी। इरना के मुताबिक ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अपनी तजावीज़ जुमेरात को पाकिस्तानी सालिसों के जरिए भेज दी हैं। उधर तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने भी पाकिस्तान को वाहिद सालिस करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में कहा कि सालिसी के लिए कई ममालिक तैयार हैं, लेकिन बाज़ाब्ता सालिस सिर्फ पाकिस्तान है। सलामती कौंसिल में रूस और चीन ने ईरान को शरपसंद कार्रवाइयों से बचाया। अमरीका ने ईरान पर खुली जारहियत की थी और इस जंग को दिफाई करार देने का कोई जवाब नहीं। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से इससे कबल भेजी जाने वाली तजावीज़ में जंग का खात्मा और हमले दोबारा ना करने की ज़मानत मांगी गई। समंदरी नाकाबंदी ख़त्म होने की सूरत में आबनाए हारमुस खोलने पर आमादगी और उसके बाद जौहरी प्रोग्राम पर बात करना भी तजावीज़ का हिस्सा था। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ मुस्तरद कर दी थीं। व्हाइट हाउस की ईरानी तजावीज़ मिलने की तस्दीक, लेकिन तफसीलात देने से गुरेज। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस का कहना है ईरानी तजावीज़ की तफसीलात मीडिया पर नहीं बताई जा सकती। निजी सिफारती बातचीत को मंजर आम पर नहीं ला सकते। ईरान से जंगबंदी के मामले पर बातचीत जारी है। सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। अभी आपको लिए चलेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। The Prime Minister and the Field Marshal, and they're working with us. They continue to work with us, but the trip is a very long one, and we're doing everything in terms of negotiating right now. In terms of the negotiation telephonically, they've made strides, but I'm not sure if they ever get there. There's tremendous discord. They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. I spoke with the winner, a very good man. As you know, I was very strongly in favor of him in Iraq. And we had a long conversation yesterday. I congratulated him. He won, and with our help, he won, and we want him to do very well. And I told him that the United States is with him all the way. It was a great victory. The new head of Iraq is somebody that we support very strongly. Pakistan has opened the land route with Iran. Did they consult you before opening it up to Iran? And are you aware of it? That was a vicious bee. I know everything about it. Yeah, I have great respect. Are you from Pakistan? No, I'm not from Pakistan. I have great respect for Pakistan and for the Field Marshal and for the Prime Minister. Yeah, I know that. On the European Union yesterday, you talked about Italy and the withdrawal of troops from Europe, from Italy and Spain. Can you clarify with your words? Well, I'm not happy with Italy and I'm not happy with Spain. And they feel it's okay for Iran to have a nuclear weapon. Anybody that feels it's okay for Iran to have a nuclear weapon is not very smart. And it'll be a terrible thing in the future. If they were ever allowed to have a nuclear weapon, you have problems the likes of which the world has never seen before, and it's not going to happen. And aside from that, right now they have no Navy. It's been wiped out. No Air Force. It's been wiped out.
They have no anything. They have no anti-aircraft. They have no radar. They have no leaders because, frankly, their leaders are very disjointed. They have a lot of problems right now. They're not getting along with each other. Their leaders are not getting along with each other. So. Why? We raised the tariffs on cars coming in from the European Union because the European Union was not adhering to the trade deal we have. So based on that, now, when they build their plants, of which they're spending over $100 billion, all countries, not just the Union. And when those plants open, there won't be any tariffs. But we raised the tariffs because they were not, as usual, they were not adhering to the agreement that we have. We have a trade deal with the European Union. They were not adhering to it. So I raised the tariffs on cars and trucks to 25%. That's billions of dollars coming into the United States, and it forces them to move their factory production much faster. We have right now in the United States over $100 billion of car plants being built. It's a record. We've never had anything like it from all countries, Japan, South Korea, by the way, Canada, Mexico, they're all building plants in the United States. But the European Union was not adhering to the deal that we made. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि ईरान डील करना चाहता है। ईरान की ताज़ा तरीन लेकिन जो तजावीज़ हैं हम उससे मुतमईन नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कहा कि पाकिस्तान की बहुत इज्जत करते हैं, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म की हम बहुत इज्जत करते हैं। ईरान की लीडरशिप 3 या 4 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। Their leadership is very disjointed, very argumentative with each other. They come back, one says one thing, one says another. They're very confused. Obviously, their country has been, frankly, decimated. Their Navy is gone, their Air Force is gone. Many of their soldiers, unfortunately, are gone. They've got to come up with the right deal. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।